हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि किस तरीके से हम राइट टीचर फाइंड करते हैं और उनके साथ लेसन बुक कर सकते हैं। सो आज के ट्यूटोरियल में हम एक एक्चुअल में लेसन जो है वो उनसे बाय करेंगे एंड उसको स्केड्यूल भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्लिक ऑन बुक नाउ एंड मेक द पेमेंट। Okay, so it says 1,000 rupees for one lesson. Okay, next. Okay, so मेरे वॉलेट में ऑलरेडी 1,000 रुपीज़ हैं, सो आई विल चूज़ दैट टू बाय द लेसन। अदरवाइज मैं कार्ड से या बैंक अकाउंट से पेमेंट भी कर सकता हूँ। ओके, सो जस्ट look at the quick summary. So one lesson 30 minutes and this is how much she will be charging me. Okay, confirm payment. ओके, सो मेरी पेमेंट प्रोसेस हो रही है और लेसन बुक हो रहा है। Okay, thank you for the purchase. Your order has been successfully processed. You can view your order history by going to my account page, or it says you can view classes here, or you can schedule lesson. So students, जब तक आप अपना लेसन परचेज करने के बाद उसको स्केड्यूल नहीं करेंगे, इट मीन्स आप टीचर को नहीं बताएंगे कि आप किस टाइम पे वो क्लास करना चाह रहे हैं, तब तक वो क्लास नहीं होगी। सो इट हैज़ द बेनिफिट टू द ट्यूटर, टू द स्टूडेंट के वो अपनी मर्ज़ी से अपना लेसन बुक करता है अपने टाइम पे जब वो चाहता है, बिकॉज यू आर पेइंग द फॉर द लेसन। सो आप अपना यहाँ पे अपना अवेलेबिलिटी के रिलेटेड। ओके, सो अवेलेबिलिटी में जो ग्रीन डॉट्स हैं इट मीन्स शी इज़ अवेलेबल ऑन दैट टाइम, एंड जो वाइट है इट मीन्स शी इज़ नॉट अवेलेबल ऑन दैट टाइम, और जो रेड होगा इट मीन्स शी इज़ ऑलरेडी बुकड ऑन दैट टाइम। सो okay, sorry, not this time. Okay, today she is not available. सैटरडे को उसके टीचर के पास अवेलेबिलिटी है, सो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अगर जाए यहाँ पे। सो मुझे इसके लिए 9 to 10 o'clock तक इसको ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। सो बुक द लेसन, सो फ्रॉम हियर टू हियर 9 to 9:30. Okay, because lesson time is only for 30 minutes, so I will confirm it. Okay, now lesson is scheduled successfully. जैसे ही लेसन मेरा स्केड्यूल हो जाएगा, मेरे होम पेज पे मुझे नज़र आ रहा होगा कि मैं उस लेसन को स्केड्यूल कर सकता, मेरा लेसन स्केड्यूल्ड है। नाउ आई कैन टेक द लेसन। सो मेरा लेसन स्टार्ट होगा लाइक इन 1 day 21 hours 31 minutes एंड ऑलमोस्ट 17 seconds। सो ये मुझे रिमाइंडर भी रहेगा, मैं किसी भी टाइम लॉगिन करके इसको चेक कर सकता हूँ। यहाँ से आप एंटर पे एंटर हो सकते हैं अपने क्लासरूम में, एंटर क्लासरूम टू स्टार्ट द लेसन। अभी टाइम नहीं हुआ सो इट विल नॉट स्टार्ट। अगर आप इसको रिस्केड्यूल करना चाहें सो बिफोर 24 आवर ऑफ लेसन यू कैन रिस्केड्यूल इट विदाउट एनी कॉस्ट। लेस दैन 24 आवर्स आपको इसके 50% जो है वो चार्जेस डिडक्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आपके डैशबोर्ड के अकाउंट एंड सेटिंग्स एट्सेट्रा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।